आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ रेप के बारे में। हमें एक बेटर सोल्यूशन खोजना है इसके बारे में, ठीक है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि एवरी डे, हर दिन 91 रेप होते हैं 2020 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि रेप का रेट कम नहीं है और कितना तो रिपोर्ट ही नहीं होता है, कितना एक माइनर फॉर्म में होता है और कितने जाते भी नहीं रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है? तो हम लोग इस हिसाब से लगा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। तो उसका रूट प्रॉब्लम क्या है, उसको पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? और दूसरा चीज़ ये है कि हम सोशल मीडिया को भी यूज़ कर सकते हैं इन द सेंस कि हम लोग ये प्रमोट करें कि रेपिस्ट को किस तरह से मारा गया, उसको किस तरह से पनिशमेंट किया जाए, और आप ये पोस्ट करिए कि ये रेप करने के बाद इसको किस तरह से पीटा गया, ठीक है? तो आप ये पोस्ट कर सकते हैं अपने आप से। ये सही में एक बहुत पेनफुल सिचुएशन जब आदमी लोग जानवर की तरह बिहेव करते हैं। फीमेल जो माँ है, बहन है, उसको सब लोग इस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। कहीं ना कहीं उनका अंदर जानवर छिपा रहता है जो निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है? तो कम से कम भी एक चीज़ रहना चाहिए, सोशल मीडिया में काम का चीज़ आप लोगों को वायरल करना पड़ेगा कि किस तरह से इन लोगों को पनिशमेंट दिया गया। जैसे निर्भया केस में था, उन लोगों को हैंग कर दिया गया था। अगर उसके रिलेटेड वीडियो है आप लोगों के पास तो आप उसको वायरल कीजिए, उसको सेंड कीजिए। ये सेंड करना ज़रूरी है क्योंकि उन लोग मन में थोड़ा बहुत डर रहे हैं ना, वो लोग के स्टेप्स लेने जा रहे हैं, तो उन लोगों के दिमाग में ये फ्लैशबैक हो कि ऐसा भी हो सकता है हम लोग के साथ ये करने के बाद। तो इसमें थोड़ा बहुत रिकॉर्ड आएगा, ठीक है? अब देखिए, लॉ इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। कितनी जगह में आपको पता है बच्चे लोगों को उठा के ले जाते थे और किडनी चोरी कर दिया जाता था उनका। तो किडनी चोर लोग गाड़ी में आते थे रात के टाइम में और बच्चे को उठा के ले जाते थे। तो वहाँ के किसान लोगों ने जब कंप्लेन करने गए तो उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो क्या किया किसान लोगों ने, ग्रुप बनाया अपना। अब कोई भी आए रात के टाइम में गाड़ी लेके तो उसको पकड़ के वहीं पर खत्म। अब लॉ को हाथ में ला, इसको हम लोग मॉब रूल बोलते हैं, इसमें हम लोग पकड़ के, क्योंकि देखिए लॉ इम्प्लीमेंट करने में, अप्लाई करने में, ये जो इन्फोर्समेंट का जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग सबका इम्पेशेंट बना देता है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसे सिचुएशन सब लोग अपने हाथ में लेना चाहेंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी का रेप हुआ तो ये उन लोगों का लोकल बॉडी एक्टिव हो सकता है ऐसा करने में, ठीक है? ये लॉ हाथ में लेना तो बहुत अच्छा बात नहीं है, ठीक है? लेकिन ये लोग भी लाचार है अगर उनके बच्चे में इस तरह का अत्याचार हो रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर रेप में थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों को पता होता है। इस चीज़ को सही में इतना माने हम लोग को एक्सपोज करना पड़ेगा किस तरह से इन लोगों को पनिशमेंट दिया जाता है। इस पर ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग स्ट्रेस करते हैं तो बाद में जो गैंग रेप वगैरह होता है, इन लोगों को थोड़ा भी डर रहेगा, ठीक है? और आप ये सब फोटो भेजिए जैसे कि देखिए कैसे कैसे मारा जा रहा है, ठीक है? कैसे पकड़ के इन लोगों को मारा जा रहा है, कैसे पकड़ के इन लोगों को हैंग किया जा रहा है, और कैसे इन लोगों को आप देखिए शूट करने जा रहे हैं, ठीक है? कितने देशों में कैसे शूट कर देते हैं, किसी दिन में गर्दन काट देते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ अगर आप वायरल कर सकते हैं, किस तरह से मार दिया जा रहा है इन लोगों को, अगर इस चीज़ को आप वायरल कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि जो भी ये करने के लिए सोचेगा उसके दिमाग में एक बार तो ये डर आएगा, ठीक है? तो बस, और मैं आगे करना। One unfortunate subject which should not have existed, but right now it's become a national debate, which is rape. Because of a certain horrible incident that happened in New Delhi, the whole country is talking about rape. So, this needs to be understood, that though there may be a sexual stimulus to rape, it is not about sexuality alone.
It's about the power to possess. This wanting to possess comes from various things. One fundamental mistake that societies have done is somewhere in the minds of the youth, the male youth in the world, we have put the idea that a female is an object, a thing that you can possess. Either somebody's father can give you away, if he refuses, you can take it. It's still there, isn't it, in the background? Somewhere very deep in the psychological structure, there is an idea that a woman is a commodity. A commodity is… if something doesn't have a mind of its own, that's a commodity. So, this probably in some places consciously implanted, in many other places unconsciously implanted, but it's deeply implanted in people's minds. Without taking this away, just one more law, hang the rapist, castrate the rapist, is not going to really produce results. And where does this come from? They did a very wonderful thing in the ancient Bharat or India. The Hindu law proclaimed, a man cannot go to heaven without his wife. You must understand the significance of this. I want you to understand the significance of it. A few thousand years ago, in many ways today, the playing field has been leveled for man and woman not because of any great social evolution, but because of technology. The technological development which has made a woman being capable of participating in many global activities. If there was no technology, if it was a question of your physical strength which carried you from place to place, definitely a woman would be still very homebound. Not that she shouldn't be home, I'm saying being home is one thing, being homebound is one thing. Being home is nice. Being bound by home is a different thing. So, yes, definitely, when somebody perpetrates a violent act, they need to be punished. But still, if you want a better society, not just better laws, a law or a punishment is only relevant after things have gone wrong. Hanging somebody, doing something else is still not going to fix somebody's life. If we want to see that things don't go wrong, there may be no absolute fix, but definitely there is something called as lowering the percentages or heightening the percentages. When you're dealing with a larger world, it is only a question of lowering the percentages. Maybe there is never going to be an ideal society where no such thing will happen.
But in striving towards that possibility, the most important thing is we need to understand. Right now, the chant that we were doing is just about that. Still, in most minds, a woman means body parts, an accumulation of body parts. Yes? A breast, a navel, a curve, long hair, something. That's why many of you have short hair these days. One part of it you've gotten rid of. It is still a sum of body parts. Why is a woman a sum of body parts in someone who is not a woman? Is essentially this is springing. This is not just with a man, with a woman also, but she doesn't conclude, she does not make the same conclusions that a man makes, but she is also bound by the same limitations. The moment the boundaries of your physicality becomes ultimate boundaries of life, you do not experience your breath, you do not experience any transaction that's happening to keep you alive. This you think is ultimate boundary. If this is ultimate boundary, if I look at this, those who look like just like me, they are enemies we would like to get rid of. Those who look different, those who seem to have different kinds of body parts, are something that you want to possess. So essentially, the problem is rooted in investing too much in physicality of life. If societies or human beings were experiencing their lives little more than their physical boundaries, these things would simply go down just like that. Maybe not eliminated, but would go down dramatically and considerably to a point where a few offenders, you can deal with them with punishment. You cannot deal a vast majority of population with punishment. Suppose 10, 15, 20% of the people are committing crime in a society, you cannot punish 20% of the population. If it's 1%, you can punish them, you can deal with punishment. If it's 20%, you cannot deal with punishment, it's not going to help. You want to hang 20% of the population? That's going to be worse than rape. And that's not going to help. So punishment, people think, is a deterrent. To some extent it is, maybe. For most people it is not. They will just try to do it more carefully. Yes, they will try to take more precautions about it. Maybe because they have to take more precautions, it may come down a little bit. But still, what's happening in one's mind and how it translates into life is the next step. But it's happening in your mind means when there's an opportunity, it will happen in reality. Right now, it seems there are over 500 rape video games, very popular. The video games go like this very popular video game goes like this. A mother with two daughters is in a railway station, and the video game is about how to rape the mother. If you successfully do it, you'll get one of the daughters. This is a video game, commercially being sold, bought in millions. Secretly, people playing these games in their homes or offices or wherever on their computers.
We are nurturing a sick world and we expect it to not to happen in the railway station. It will happen. This time it happened in a bus and this time it happened in the capital city, so it's big news. The whole country and the media is on. Fine, attention was needed for this. But if it happened in somewhere, some local place, in some village, in some little town, it would be just one more statistic, or it does not even become a statistic because nobody reports such things.